Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering all the national news items which were important for June 2025. So the first news is polio surveillance shift. This video is for the Cbse direct recruitment examination. So I'll be covering all the important news items which are important for the month of June 2025. ठीक है, फर्स्ट है पोलियो सर्वेलेंस शिफ्ट. Government and WHO are phasing out the national polio surveillance network centers, reducing them from 280 to 140. Not important. Then, new identity for Lokpal. A new motto and logo has been adopted by the full Lokpal bench. The motto is Empower Citizens, Expose Corruption. ठीक है, तो this is important. Next, knowledge cards. Forest rights milestone. 324 Forest Right Act cells sanctioned under Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan across 18 states and union territories. So, this is also not very important. Next, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan celebrates 9 years. So this scheme in turn is important और ये न्यूज़ आइटम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. Next, empowering waste pickers. Ministry of Social Justice launched a nationwide enumeration app under Namaste to provide social security. So this is important. ठीक है, nationwide enumeration app है. किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने. नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ प्रतिभा टू कनेक्ट टैलेंट विद एम्प्लॉयर्स. तो प्रतिभा का फुल फॉर्म क्या है? प्रतिभा सेतु है. Basically, professional resource and talent integration bridge for hiring aspirants. Those students who had appeared in the interview of UPSC CSC का इंटरव्यू जिन लोगों ने अपीयर किया है बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मेक इट, उनके लिए प्रतिभा सेतु ऐप है. उसके थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयर्स कैन एम्प्लॉय देम डायरेक्टली. ठीक है. नेक्स्ट है भारतीय भाषा अनुभाग. Home Minister Amit Shah launched this section to move administration away from foreign language influence. So, होम मिनिस्ट्री में एक सेक्शन लॉन्च हुआ है, उसका नाम है भारतीय भाषा अनुभाग. नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ भारत जैन AI समिट. लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस. तो उसका नाम क्या है? भारत जैन AI. Next, NIIH Mumbai under ICMR has launched a national registry to organize and track rare blood donors. ठीक है, तो NIIH Mumbai under ICMR. Then President had visited तपोवन. इसका फुल फॉर्म होता है, ये देख लो पहले. NIIH is National Institute of Immunohematology. ठीक है. President Murmu had opened Rashtrapati Tapovan and visited the Institute for Empowerment and Persons with Visual Disabilities. Not very important. Gyan Post. Department of Posts introduces a dedicated service for the affordable delivery of education and कल्चरल बुक्स. ये पुराने वाले उसमें भी था, मई मंथ में भी था. ठीक है. नेक्स्ट है अफोर्डेबल वाईफाई. Telecom Regulatory Authority of India prescribes a tariff cap for public data offices under the PM Wani scheme to ensure access to affordable Wi-Fi. ठीक है. Next है hassle-free highways. Transport Minister has announced a FASTag based annual pass of rupees 3,000 for seamless travel. Not important. Then
One Nation, One Time. Indian Standard Time made mandatory for all legal and digital activities. तो ये ड्राफ्ट रूल्स आए हैं. उसके अंदर IST has been made mandatory for legal and digital activities. Then Vineet Joshi panel. It is constituted to assess exam fairness and reduce dependence on coaching centers. ठीक है. तो this is important थोड़ा सा. Vineet Joshi panel is for um, to reduce student dependency on coaching centers. Next, India Central Asia Dialogue. India hosted the fourth dialogue in New Delhi, chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Next, IREL Limited suspends 13-year supply agreement with Japan to prioritize domestic needs. तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सप्लाई एग्रीमेंट था IREL का जापान से. ठीक है, तो उसको अभी कैंसिल कर दिया है. और IREL का फुल फॉर्म होता है, वेट लेट मी टेल यू, इट इज़ हाँ, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड करके है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है. एंड इट हैड अ MOU टाइप था, एक अग्रीमेंट था विद जापान टू सप्लाई rare earth elements to them for 13 years. So that has been cancelled. Now Air India ये भी काम का नहीं है अभी. Then census 2027. The 16th census will occur in two phases and the reference date is set as March 1st 2027. ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि अभी 16th सेंसस हो रहा है हमारा. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, अर्बन अड्डा 2025. Union Minister Dr. Mansukh Mandavia inaugurated this urban conclave in New Delhi. Not important. Next, Vibrate. Ministry of Ayush promotes a 5-minute workplace yoga module for productivity. Not very important. ये भी. Operation Sindhu is important. It involves evacuation of Indian nationals from Iran amidst the Israel-Iran tensions. ठीक है, this is important. Next, Paraguay visit. President Santiago Pena Palacios visited India to review bilateral ties. Not very important. Then PM addresses the 81st AGM of International Air Transport Association in New Delhi. So India is first time hosting it in 42 years. ठीक है. Since the Prime Minister has addressed this meeting, so that makes this important. ठीक है, तो इसको this AGM stands for the Annual General Meeting, है ना. और IATA stands for International Air Transport Association. ठीक है, this is important news item. फिर है एक पेड़ माँ के नाम. Prime Minister Modi had planted a sapling at Mahavir Jayanti Park for World Environment Day. Then not very important, Mango Man. Ali Kalimullah Khan from Malihabad names a new mango variety after the Defence Minister Rajnath Singh. Haji Kalimullah Khan from Malihabad, who is also known as the Mango Man. बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि मैंगो मैन कौन है. हाजी कलीमुल्ला खान. नेक्स्ट, AI in railways. DIBD and CRIS sign an MOU for multilingual AI solutions in the National Train Inquiry System. ठीक है, इसमें DIBD का फुल फॉर्म, वेट लेट मी टेल यू. DIBD stands for Digital India Bhashini Division.
ठीक है। नेक्स्ट, जनमन सर्वे launched on the Namo app to commemorate 11 years of Prime Minister's office. Next, railway projects. CCEA has approved two major projects. This is not important. Then CROPIC launch. Agriculture Ministry launches tech-driven initiative using AI to monitor crop health. इसका नाम है CROPIC. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. क्रॉप पिक करके इसका नाम है. एंड क्रॉप पिक स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. नेक्स्ट है चेनाब ब्रिज. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज. उसका चेनाब ब्रिज इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट single arc railway bridge, and geotechnical role was by Professor G. Madhavi Latha. Next, Sita app. Launch of India's first mobile app based gig platform exclusively for women. This is also important. Next is CCares 2.2. The Coal Minister launched this portal for CMPFO, and it is designed by CDAC. ठीक है, CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और CMPFO स्टैंड्स फॉर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल ऐसे पूछ सकते हैं कि सी केयर्स किससे रिलेटेड है. तो ये कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग दे हैव, दिस इज़ अ वेब पोर्टल फॉर CMPFO. ठीक है. तत्काल सिक्योरिटी. मैंडेटरी e-Aadhaar authentication introduced for booking तत्काल train tickets. Then दाजा campaign. धरती आबा जन भागीदारी अभियान covers 1 lakh plus tribal villages. तो this is important. ठीक है, धरती आबा जन भागीदारी कैंपेन ट्राइबल विलेजेस के लिए है. इट इज़ बेसिकली एम्ड एट ट्राइबल वेलफेयर to saturate welfare schemes amongst tribal communities, named after the tribal icon Birsa Munda. ठीक है. Next, Indus water pause. India writes to World Bank expert to pause proceedings on Ratle and Kishanganga disputes. Next, estimates committee है. ओम बिरला inaugurated the national conference in Mumbai. ये किसी काम का नहीं है. Next है Centenary Talks, a celebration of the historic conversation between Sri Narayan Guru and Mahatma Gandhi. Not important. Kanishk bombing. External Affairs Minister pays homage to 329 victims of the 1985 Air India bombing. 40th anniversary, not very important. Next, Dr. Shyama Prasad Mukherjee. A nation pays tribute on his martyrdom day. तो ये भी इनका भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है CBSE रिफॉर्म. क्लास 10th स्टूडेंट्स टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम 2020. ठीक है, तो ये 2 बार होगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. अभी आदि कर्म योगी. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनिशिएटिव टू ट्रेन इम्प्लीमेंटर्स ऑफ ट्राइबल welfare schemes. This is important.
So this is by Ministry of Tribal Affairs, Adi Karam Yogi scheme. Next is Sugamya Bharat AI. The app has revamped with AI features for Divyangjan and seniors. It is a crowdsourced platform which was originally launched in 2021. So this is again important. Then we have wildlife overpass. The National Highway Authority of India has constructed its first wildlife corridor 12 kilometers ka, on Delhi Mumbai Expressway through Ranthambore buffer zone. Next, Operation Deep Manifest. DRI has seized Pakistani origin goods worth 9 crores नहीं देखो बस नाम पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इज रिलेटिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आ जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI. नेक्स्ट वी हैव PM नरसिम्हा राव का बर्थडे, नहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं है. This is also not important. This is important. Government of India Stats app, GOI Stats app. A National Statistics Organization has launched this mobile application on Statistics Day. So this is important. Okay. So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful.